shall we talk of a number that haunts the Indian education system? 90%. That is the cumulative percentage of you as test takers who could not make it to an IIT, an NIT, an IIM, or maybe to any premier B school, or for that matter any institution. हम बचपन से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि अगर IIT नहीं कर पाए या NIT नहीं कर पाए या IIM में नहीं जा पाए तो फिर आगे लाइफ बहुत ही मुश्किल होने वाली है. Is that true in 2026? Or the premier college tag has become a gilded cage of expectations while the world moves on? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. मैं हूँ अप्रतिम और आज हम बात करेंगे कैसे आप टीयर 3 कॉलेज से पास आउट होकर भी टीयर 1 कॉलेज के कॉम्पिटिटर के साथ इंडस्ट्री में टक्कर दे सकते हैं. द आयरनी इज व्हाई यू आर वरिंग फॉर योर नॉट सो प्रीमियम कॉलेज, द इंडस्ट्री हैज मूव्ड फ्रॉम द पेपर सीलिंग. Look at the numbers. According to the India Skills Report 2025, the overall employability report has risen to 56%. For computer science and IT, the number is a staggering 80%. अब ध्यान से सुनिए, 30% of the Indian employers have removed the degree filters from different roles. That is higher than the global average of 19%. Problem आपका कॉलेज नहीं है, problem है वो 3-tier mindset. You wait for a placement cell that does not exist. The tier 1 kid is handed a silver platter package. You wait for the companies to come to you. Agreed. The tier 1 kid has legacy. You need lethality. So, how do you beat them? You don't play their games. You change the rules. Step 1. The digital equalizer. Hiring managers today look at the evidence of work, evidence of curiosity. IITians के पास डिग्री होगी, आपके पास आपका वर्क पोर्टफोलियो होगा. If you don't have a GitHub that is green and your LinkedIn doesn't speak of your portfolios, you are far behind the IITians. You need to build up the portfolios that speak for you. Step 2. Fluency over theory. So by the time tier 1 kid is going through its obsolete curriculum, 2026 demands agentic AI and LLM integration. Focus on these. जब तक टीयर 1 कॉलेज के बच्चे अपने पुराने TSA वर्कशीट को भर रहे होंगे, यू विल बी वेल वर्स्ड विद द न्यू टेक्नोलॉजी. आप AI एजेंट्स डिप्लॉय कर सकेंगे और यही आपके हित में काम करेगा. Step 3. The cold DM culture. Networking is the new placement cell. The gig and the third-party roles in India have increased to 16%. Startups and global capability centers, GCCs, are looking for plug-and-play roles. आपका रेफरल IIT के एल्यूमिनी नेटवर्क से नहीं, आपके ओपन सोर्स से गिना जाएगा. अब सोचिए आपके पड़ोसी गुप्ता जी के बेटे के बारे में, जो भोपाल के किसी 3-tier कॉलेज से डिग्री लेकर आज गूगल में काम कर रहा है. कैसे? परसिस्टेंस, रेसिलियंस और एक रियलाइजेशन कि कैंपस सिर्फ एक लोकेशन है और मार्केट एक माइंडसेट. आपके कॉलेज का गेट छोटा हो सकता है, पर उस कॉलेज से बाहर निकलिए तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री बहुत बड़ा है. डोंट वेट फॉर अ कंपनी टू कम टू योर कैंपस. चेक इनटू देयर लिंक्डइन. गिव देम अ रीजन टू हायर यू ऑन योर स्किल्स and not the pedigree. The era of degree first is dying and the skill first has evolved. 2026 and the year beyond doesn't care about your PIN code, but your coding capabilities. Stop surviving, start competing. If you want to know which skills can pay you better, check the description below. Finally, we have launched our personal career counseling sessions. So you can avail it for yourself, your child, or any friends and relatives regarding any doubt related to your NEET, JEE, or any other career options that you're looking for. What, why, from where, anything and everything related to career, you can ask from us. Where you can check the link in the description below. If you find this video insightful, like it. Support us by subscribing to this channel. Take care till we meet in the next video.